मैं अभी उपस्थित हूँ गुवाहाटी के मुस्लिम जनबहुल इलाका दक्षिण गांव में और आज दक्षिण गांव में असम के शिक्षा मंत्री रणोज पेगू पहुंचे हैं। असम के जो गुवाहाटी लोकसभा सीट है, लोकसभा सीट के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बिजुली कलिता मेधी के लिए चुनावी प्रचार के लिए खुद शिक्षा मंत्री यहां पहुंचे हैं और यहां पे जो इस इलाके के ज़्यादातर लोग यहाँ पहुँचे और एक विशाल जनसभा दिखाएगा। हमारा वीडियो जर्नलिस्ट दिखाएंगे किस तरह से यहाँ जनसभा में लोग भीड़ लगाए हुए हैं, जिसको सबका साथ सबका विकास को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, उस नारा को लेकर ही इस जो गुवाहाटी के जो दक्षिण गांव जो मुस्लिम इलाका है, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं और यहाँ पे देखा गया कि सभी लोग जो फिर आको एबार मोदी सरकार नारा जो है आसामीज वही नारा लेकर फिर यहाँ पर पहुँचे हैं। ये जो इलाका है सबसे बड़ा इलाका है, दक्षिण गांव जो मुस्लिम इलाका है। यहाँ पे जो शिक्षा मंत्री खुद लोकसभा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उनके प्रसार के लिए पहुँचे। सभापति नूर आली डांगरिया, सम्पादक बरभुइया डांगरिया और मोर पितृ मातृ भाई भनी बंधु बान्धव सकल আপোনালোক সকলোকে মোৰ নমস্কাৰ আৰু সেৱা জনাইছোঁ। দেশত সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু অহা 7 তাৰিখে আমাৰ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ ভোট গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ আগমুহূৰ্তত আপোনালোকে আজি ঘৰৰ কাম বন বাদ দি পেলাই ওলাই আহিছে, কাৰণ নাগৰিক হিচাপে আমাৰ এটা দায়িত্ব আছে। ভাৰতবৰ্ষত আমি নাগৰিকে ভোটদানৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰ গঠন কৰোঁ, কিন্তু এইবাৰ চৰকাৰ গঠন এই ইলেকশ্যনটো অলপ বেলেগ ইলেকশ্যন। মই ইয়ালৈ আহি থাকোঁতে গাড়ীখন ৰখোৱাৰ আগত সৰু বাচ্চাবিলাকেও কৈছে আমি তেখেতৰ শেষ কৃত্য ইতিমধ্যে বশিষ্ঠ আমাৰ শ্মশানত হৈ আছে। আমি তালৈ গ'লোঁ, তাত তেখেতক শেষবাৰৰ কাৰণে সেৱা জনালোঁ আৰু পৰিয়ালবৰ্গক লগ পালোঁ। গতিকে মনটো বৰ দুখো লাগি আছে, কিন্তু আপোনালোকক যিহেতু ইয়াত আপোনালোকে অপেক্ষা কৰি আছে, আপোনালোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'ব লাগিব। অহা 7 মে তাৰিখে হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনত আপোনালোক সকলোৰে সহযোগিতা লাগিব, শুভকামনা লাগিব, আশীৰ্বাদ লাগিব আৰু সেই নিমিত্তে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু আপোনালোকক হৃদয়ৰ পৰা ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যেহেতু আপোনালোকে ইমান সময় ইয়াত বহি আছে আৰু আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা শিল্পীগৰাকী আপোনালোকক আমোদ দিলে, গতিকে তেখেতকো ধন্যবাদ। इस बार सबका साथ सबका विश्वास लेकर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। हाँ, ये हो रहा है। ये पहले कुछ लोगों ने सोचा था ये सिर्फ एक निर्वाचन के चुनाव नारा है। ये नारा नहीं है, ये प्रिंसिपल है जिसको लेकर सरकार आगे चल रहा है। अब दरअसल में सबका साथ सबका विकास हो रहा है। मेजोरिटी माइनॉरिटी सब इलाका में सब लोगों के लिए विकास हो रहा है और विकास ही मुद्दा है। विकास के लिए एक विकसित भारत के लिए, विकसित असम के लिए जनता वोट करेंगे। পাৰ্চেণ্টেজ নহয়, আমি ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি পাইছোঁ। নিৰ্বাচনৰ যেতিয়া ফলাফল ওলাব, EVM এভৰি ভোট ফৰ মোদী, এভৰি ভোট ফৰ মোদী ই বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'বলৈ গৈ আছে। জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে বুজি উঠিছে যে মোদীজীৰ সবকা সাথ সবকা বিকাশ এয়া সঁচা অৰ্থত যে সকলোৰে কাৰণে বিকাশৰ কাৰণে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মোদীজীয়ে কাম কৰিছে, সেইটো সকলোৱে গম পাইছে। আসাম में फिर से मोदी का जो नारा है सबका साथ चलेगा, वो फलने जा रहा है। वहाँ वही चलेगा, वो चला 10 साल, अभी और 5 साल वही चलेगा और बरसों के लिए वही चलता रहेगा। नमस्कार। आज आमार वार्डत 41 प्रतिটো वार्डতে এখনকে আমাক মিটিং দিবলৈ দিছিলে মন্ত্ৰীসকলে। ৰণোজ পেগুতে আমাৰ লগত আছে আজি আমাৰ মিটিঙত। কেণ্ডিডেটো আহি আছে, তাই সোণাপুৰৰ পৰা আহিছে কাৰণে অলপ দেৰি হৈছে। গতিকে এই মিটিংখন
আমাৰ বহুত ভালকৈ পাতিব পাৰিছোঁ যথেষ্ট মানুহ হৈছে মোৰ ভাল লাগিছে গোটেই ৰাইজখনে উফৰি পৰিছে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ বাইদেউ আহি পালে চাগে বিজুলী বাইদেউ আহি পালে গতিকে আমি আশা কৰিম বাইদেউ এই অঞ্চলৰ পৰা 99% দি পেলাই আমি জিকাই পঠাব পাৰিম আৰু এইটো হ'বই গতিকে